Right. Okay, let me move you to gallery view. Right. Okay. Yeah. Are you able to see me now? Yes, sir. Saif Ali, are you able to see me? Yes, sir. I am able to see you. Okay, very good. So yesterday we were discussing about this. Okay, good. Yesterday we were discussing about layout and design, and we will see today what we mean by. I mean, we'll continue that only, and then I'll tell you. Today we'll because this is थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है इसके इसलिए आपको ये पता करने से बाकी पूरा जो भी है all publications can be brought out easily if you understand the basics of what we mean by layout and design. So yesterday I mentioned to you about layout and design, and I would like you to keep that book also ready with you in front of you when we are discussing this. Meanwhile, let me present to you the layout and design. Let me एक minute. Yeah, okay, इधर है हाँ जी ठीक है अभी मैं आपको शेयर स्क्रीन ओके ठीक है ओके सेलेक्ट ओके 1 minute ओके आपको देख पा रहे हैं Not yet, आर sir. यू एबल टू सी एनीथिंग Not yet, sir. It's हुजैफ loading. अली Not yet, sir. It's नॉट loading. येट 1 minute It's loading, sir. Maybe it will start 1 second soon. ओके ओके शायद अच्छा इज लोडिंग ना ओके ठीक है अभी देखो आते ही मुझे बता दो Okay, sir. नेट का चक्कर होगा कुछ लेट देखूंगा मैं न्यू शेयर इट्स गिविंग लेट मी सी अगेन नो इट्स नॉट कमिंग कुछ आ रहा है अभी कुछ आ रहा है आर यू No, एबल sir. टू सी Still, एनीथिंग no, sir. Still loading. इट्स लोडिंग बट इट इज नेट इज ऑन यार ठीक है 1 मिनट ठहरो फिर बोल तो मैं यहाँ चले जाऊंगा यहाँ जाके स्टॉप I will stop and rejoin in 1 minute. The view क्या रहना विंडो रहता गैलरी व्यू ओके 1 minute अभी देखिए आ रहा है कुछ Yes, sir. I am able नहीं to see. Yes, sir. you are able to see Yes, layout sir. and design Yes, sir. Summary, okay summary layout is नहीं a graphic. समरी छोड़ दो नहीं समरी नहीं अभी मैं आपको बताऊंगा ठहरो अभी देखो लेआउट एंड डिजाइन आ गया ना Yes, sir. ठीक है Yes, sir. yeah layout and design yesterday we started this so what exactly is the layout it's a graphic activity of arranging all visual elements on a page what are the visual elements can you tell me in a page what are the visual elements सबको आपको मैंने सपोज एक पेज Sir. न्यूज़पेपर का पेज दिखाया आपको ये दिख रहा है कुछ बाय एनी चांस ये पेज दिख रहा है आपको ये लगा दिया मैं Yes, मेरा sir. तस्वीर Yes, नहीं sir. दिख रहा आपको या Yes, sir. थोड़ा कुछ दिख रहा है तो पेज में क्या क्या दिखता है आपको बताइए तो आपको समझ में आ जाएगा so I told you yesterday that we keep everything text illustrations okay heading sub headings captions all these things are arranged in the form of columns then we have to arrange them in a particular way I told you why we need to arrange them then only
the reader will be able to see all the hard work that you did in arranging the material, Sir, there is an internet problem, maybe, sir. I editing the cannot hear your voice clearly. selecting a font and everything, coining a headline and other things. So layout is that particular area where you're going to have with the reader through a layout. And when you want to connect to the reader through a layout, you are able to connect to the reader through a layout. And when you want to connect to the reader, you have to enter a headline. So this is very essential for us. So as you can see, in general language making, you are able to hear now. I think it could be due to 1 minute. I'll just speak. अभी सुनाई दे रहा आपको फैजल अली? Yes, sir. Now I can hear. You're able to hear now? Yes, sir. Now I can able to hear Hello. you. अरे जब प्रेजेंट करते समय हो रहा है तो झंझट यही है. एक मिनट ठहरो. ओके ठहरो. 1 minute. Are you able to see now? Hello? No, Hello? sir. It's loading, Faiz sir. Ali? It's loading, sir. Oh, it's loading. But you are able to hear me, right? It's You are not clear, able sir. to But I hear am able to hear you, me. but it's not clear. It's means थोड़ा voice is अच्छा breaking. let me rejoin 1 minute. Okay, sir. I will wait. I will wait for the time. No, no. Okay. I'll rejoin. Okay. Are you able to hear me now? Faiz Ali. Yes, sir. I am able to hear you, sir. ठीक आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, सर. अभी वो वाईफाई से ज्वाइन हो गया मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं रहेगा वो वाईफाई Okay, sir. हॉटस्पॉट में था इसीलिए कुछ Yes, sir. I can. लेट मी सी इफ आई कैन शेयर द स्क्रीन ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो रहा है बता ओके अभी देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको Yes, sir. It's clearly and voice is also clear, sir. Voice of yeah, very good. So I'll now continue. So in other words, whatever we arrange in a page, yesterday I was telling you a lot of examples of interior decoration when we, arrange a room and everything. That is for convenience of like how we for your convenience. It is for the reader also. It should be convenient when we arrange various elements in a page. Like about एक न्यूज़पेपर का पेज ले लीजिए
या आपका हाउस जर्नल पब्लिक रिलेशन का जर्नल में पेज में 2 या 3 स्टोरीज रहता है. स्टोरीज मतलब आइटम स्टोरीज. So how will you arrange these things? You must arrange these things in such a way that the reader is able to be attracted to them. He should be able to stick to them. आप लिखने से नहीं होता हो, आप कैसा सजाएं उसको, उसके हिसाब से भी वो होता है. That's the main idea. That's the thing. So in other words, what we mean is it is general appearance of a printed page. If it looks clean, neat, the reader will feel like sticking onto the page. Otherwise, what he will do, if the page is not good, he will turn the page immediately and go away, and 6 stories have gone away. So he jumps to the other page. So, in order to make him stick to that page, make him stick to a particular story, you want to make arrangement, what is known as a layout. So, all of us we have seen here, you can see display matter, reading matter रहता, related photographs रहता, illustrations रहता, line drawings, diagrams, etc. All these will be there. So any भी जो भी आप अगर publish करेंगे, it can be a brochure, annual report, chairman speech, house journal, like how yesterday I discussed. Now, what are the essentials of a good layout? What is that we can expect in a good layout? What one is, it will have all the text matter, it will have raw material, and everything is arranged in an attractive manner. But you must remember that in your organization, you follow certain style with regard to the spellings, certain style with regard to the use of font, certain style with regard to the space between the lines, certain style as to how you will start the paragraph. आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैराग्राफ के बिगिनिंग में स्पेस नहीं देते आप, बाकी वाला ऑर्गेनाइजेशन देता है. तो इसका मतलब आप नहीं दे रहे, मतलब आपका एक नियम है, एक रूल्स है, एक तरीका है, उस तरीके से आप जाएंगे. So this is known as house style. So house style will be there by the side of the designer. And in terms of the spellings also, SATION or ZATION. थोड़े लोग कलर COLOUR लिखते हैं, थोड़े लोग COLOR. तो अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं या ब्रिटिश इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं उसको. सो दैट को पहले तय किया जाता है, और एक हाउस स्टाइल स्टाइल शीट बोलकर एक किताब रहता, छोटा बुकलेट के जैसा रहता, वो हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ज्वाइन होता नौकरी में उसके हाथ में डाल देते हैं, ताकि when he is trying to do the layout and designing, he is sticking to certain style, certain uniformity, so that gives identity to that paper. So if you are able to identify, say, Inadu from Sakshi, you are able to identify Namaste Telangana from Sakshi, you are able to identify Siyasat from Rainuma Itaka, you're able to identify Hindu from, say, Times of India or Indian Express. So every paper has its own identity, a house style, wherein they are very particular about the spellings, the space between the lines, space in the beginning of the paragraph, how will you put the page number. Everything is taken care of in this particular style sheet. So that is there as your manual by your side. So in this, what we is that always remember the way we write it also it will attract the reader. So it should be set in a pleasing manner to go through. Captions also should be given. Main heading, subheadings, they should be catchy and attractive. This we have already seen yesterday. The written word when why are you adding illustrations so that you're making it more attractive. So, good layout is nothing but arrangement of text matter, illustrations, diagrams, adoption of suitable typefaces, arrangement of captions, all in a harmonious manner, which means it should not distract your eye. It should not be inconvenient to the eye of the reader. So, it should be able to attract the reader and also stick on to that. Okay, that's what we mean by that. So, layout of corporate publications. What do we mean by that? So in all corporate publications, this happens. So one of the important criteria in judging and awarding the best publication is layout. परसों परसों एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज अपने अपने हाउस जर्नल्स और अपने अपने पब्लिकेशंस को डिस्प्ले करे थे. So L&T or say Singareni, they all got prizes. So when judges are there, I have been a judge in judging the layout of some of these publications. So a group of judges will be there. We will be checking not only the content, how you have written so well, how what you have selected very good photographs. What we will see is how you arranged all this material.
on the page, and then all the pages put together becomes a publication. So this important criteria, in fact. So I'm trying to tell you the importance of a layout, not only from the reader's point of view, but from the organization's point of view when it comes to its image, its brand consciousness. So वो magazine वो लोग बहुत अच्छा छापते हैं. Why sir? That's the main thing that we will be having. So let us see what is the text component. Text component. What do you mean by text component? So you have your book with you. You are having the book with you. Yesterday you Yes, have sir. seen, right? Yes, sir. I'm having. Yesterday also you have seen that. So I'm just trying to revise quickly. You have gone to page 60, right? Yes, पेज sir. 60 देखा ना आप देखिए पेज 60 आ जाओ. सो पेज 60 में देख लीजिए क्या क्या करते हैं. जैसे आप देखिए display of pictures yesterday, and you told also yesterday the diagonal is very nice to please, it's very pleasing to the eye, so it's very well balanced also. But diagonal is one way of doing, vertical is one way of doing, horizontal is one way of doing. And to arrange all these things, earlier पुराना जमाने में हर एक चीज को बेचारा बंदा कंप्यूटर में जाके जब सॉफ्टवेयर नहीं था तो ये पूरा अरेंज करता था. अभी आजकल क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी आर इन अ पोजीशन टू actually, what we call it as, you know uh, everything is decided, size and page margin, size and position of images, सारा चीज पूरा वो सॉफ्टवेयर पूरा देख लेगा. जब आप ये पूरा लगा देंगे तो कॉर्क एक्सप्रेस बोलकर एक सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या करता है बोलते हो आपको. it monitor is known as a Weisswig monitor. What do you mean by Weisswig monitor? What you see is what you get. Suppose you want to see 36 point times bold, you are able to see 36 point times bold in on your screen. So that is known as Weisswig. अब आजकल न्यूज़पेपर पेज वालों को ये 3 साइज का मॉनिटर रहता, बड़ा मॉनिटर रहता, ताकि पेज पूरा एक ही बार देख सकते हैं आप. इतना बड़ा न्यूज़पेपर पेज भी पूरा आप एक ही बार देख सकते हैं. तो आपको जब देख रहे हैं तो कैसा कल आपका पेपर दिखेगा, कल आपका मैगजीन प्रिंट करने के बाद हाथ में आने के बाद कैसा दिखता है वो पहले आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, thanks to this particular software. So as you are able to see the page even before printing, you can make all the changes on the monitor itself with the help of this software known as Quark Express or Adobe InDesign. So these are very famous, softwares which have been there for a long time, and on more than 30 years. These have been there, and every time it's version, new version is coming. Likewise, Adobe InDesign is another area, Adobe area, जो Photoshop पे किया था, उन लोगों ने भी एक InDesign. So it is a page makeup software from where you can, design posters, flyers, brochures, magazines, newspapers, and books, as you can see here. So now we have what we call it as 1 minute. So let me get back to your presentation. Yeah. Okay. Okay, 1 minute. So presentation तो दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. Right. And then after this, so you have seen here solid setting or, and then in the text also solid setting or conventional style. Solid setting in double column. I will show you where it is in your book also. Let us go to your book and then we will see in this book we will see what is meant by solid setting. So Page आप number पीछे आ 58, जाए. sir. 58 गुड. आप पीछे आ जाइए जब पता चल जाएगा आपको व्हाट इज सॉलिड सेटिंग. देखिए डबल कॉलम में है तो ऐसा सॉलिड सेटिंग मीन द एंटायर मैटर. अभी ये देखिए सॉलिड सेटिंग है, ये जो कॉलम में है ना वो सॉलिड सेटिंग है. So solid setting in double column, in 2 columns you can arrange. Solid setting in triple column. So you can also arrange. How do you arrange the text? It can be flush left, okay, or flush right. ये देखिए ये मैटर जो है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ. ये पूरा मैटर क्या है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है. ये बिगिनिंग में स्पेस दिया वो पैराग्राफ का स्पेस है. वही कह रहा हूँ ना, वो आपका स्टाइल शीट में पैराग्राफ के बिगिनिंग में स्पेस देना या नहीं देना. थोड़े पब्लिकेशन बिना स्पेस लगाते. ये वाला अब आप ओपन यूनिवर्सिटी वाले क्या करें, हाँ हमारा होना. तो अभी फ्लश लेफ्ट बोल तो क्या है, लेफ्ट इवन रहता, राइट क्या कि अनइवन रहता. फ्लश राइट बोल तो अब देखिए ये मैटर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा. अब ये मैटर देखिए आप, ये इवन है, आपको राइट साइड इवन रहता है ये पूरा. So this is, you can see the lines also. That is what is mean by flush left and flush right. And that is the same way we also set the headlines. And you see when we want to set the headlines, you can see what kind of headlines we can have. Step lines. 3 lines are pushed
evenly to right margin. ये देखिए 3 लाइन, ये देखिए इधर ये 3 लाइन कैसे है, ये तीन के 3 लाइन देखिए, evenly to right margin, that it forms a staircase. एक सीढ़ी के जैसा, आप स्टेप्स के जैसा रहता है. So you have all these things. For example, is applicable 3 lines only, and the middle should be shorter, and then long, short, long. So flush means even on one side. रैग्ड बोलते जो अनइवन है उसको रैग्ड, RAGGED, इधर नोट्स में नहीं दिया है लेकिन वो है. तो अब देखिए फ्लश राइट, देखिए इधर देखिए फ्लश लेफ्ट है, ये देखिए फ्लश लेफ्ट है, राइट साइड में अनइवन है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ बहुत से. ये इधर देखिए राइट है, इधर देखिए लेफ्ट में अनइवन है. तो राइट में ये रहता है. इन्वर्टेड पिरामिड बोल तो क्या है, ये ऊपर से ऐसा रहता, ये ऐसा रहता. So this is now inverted pyramid. All of you know what is pyramid, right? So similarly, we have this thing ribbons. Now you see here how the parallel lines for displaying. This is like we call it as ribbon. Then boxes also. So we have something known as boxes. How it is arranged in the form of boxes. Then display of pictures. How do you arrange the picture? This we have already seen. Now, when we try to do this, when we try to arrange all these things, we use this software. After the software, we have to look into one most important thing known as typography. अभी मैं आपको वो शेयर करूंगा आपको टाइपोग्राफी. आप देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है. अभी आ गया आपको? Yes, sir. व्हाट क्या है अभी टाइप के बारे में आया? Anatomy of typography. Yes. हाँ, टाइपोग्राफी. अब देखिए टाइप का मतलब क्या है, एवरीथिंग पर्टेनिंग टू टेक्स्ट. एंड वेयर ऑल यू आर यूजिंग टेक्स्ट, कैन टेल मी वेयर ऑल यू आर यूजिंग टेक्स्ट? कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप टेक्स्ट को? Everywhere, sir. वेरी गुड. सच एज, कैन यू Such गिव as मी एग्जांपल? newspaper, हाँ, textbooks. नहीं वो सर नहीं, एक ही. अब ये एक पेपर में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं आप टाइप? हेडलाइन में यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉडी में यूज करते Ye- हैं, कैप्शंस में यूज करते हैं, Yes, sir. एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हैं. तो हर जगह आपको टाइप का जरूरत पड़ता है. टाइप का मतलब लेटर्स, टेक्स्ट. That is what. So in order to ensure that you are in a position to understand, the study of types is known as typography. So that is the topic we have got in your course material also. You see, you have in your course material. 1 minute. Uh, Yeah, okay. You have your typography page number तो दिख रहा है ना, 61 में आइए. So you have your typography. Typography means the way we arrange these types, of selection of typeface and size. You see here what exactly you mean by typeface and what do you mean by type size. So now we'll see here each one. So here एक ही एक important चीज आपको याद रखना है कि ये टाइप को कैसा मेजर करते हैं. ये टाइप को आप आर्बिट्ररी इतना छोटा इतना बड़ा बोल नहीं बोल सकते. Type has got a measurement, and from where this measurement has got. So 72 points here you can see on the screen. Are you able to see the screen? Yes, sir. I'm able to. So how is type measured? So if you take 1 inch, 1 inch, 1 inch, very well. Every one of us knows. If you break 1 inch into 72 equal parts, each part is known as a point. Each part is known as a point. So जब अब टाइप कितना बड़ा चाहिए तो उसको हम पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं. इसका मतलब अगर कोई बंदा बोलेगा 1 इंच का टाइप यूज करो मतलब 72 पॉइंट. 72. सपोज कोई आपका एडिटर बोलेगा 2 इंच का फॉन्ट यूज करो तो कितना पॉइंट्स हैं? 144. वेरी गुड, वेरी गुड. हाफ इंच? Half inch, 36. Very good. Quarter inch? Quarter inch will be 18. Very good. Okay, right. Now you know very well how we inch को भी use कर सकते हैं या point को भी use कर सकते हैं. So what happens is that for all small measurements such as the size of the letter, अब कितना बड़ा साइज है तो अब इधर है, मैं मार के दिखाऊंगा आपको. देखिए इधर ही मैं आपके मार के दिखाऊंगा कितना बड़ा साइज है. फॉर इंस्टेंस ये भी एक लेटर लूंगा, मैं इधर से लूंगा 72 निकालूंगा, 72 भी है, वो 1 इंच है. अब आप स्केल लेके नापेंगे उसको तो वो 1 इंच रहेगा. आप ऊपर से नीचे तक ये मेजर करेंगे तो 1 इंच रहेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द font that you have selected. Now, for instance, I can change the font. For instance, you see, I can come to say 72 point. I can come to anything. I can easily come to Times Roman. Let me take Times Roman.
So I'm selecting, for instance, the Times Roman so that easy for you to understand. इधर ही है वो Times Roman ऊपर चले गया मेरे ख्याल से इधर ही रहता है. Okay, 1 minute. Yeah, Times New Roman. So if I have this, you see, so this is now known as 72 point or 1 inch. Okay, if I want more, hello, Pizza, hello, Yes, sir. क्या हुआ? Oh, yes, sir. Your voice is too low, but I can hear you, sir. अभी आ रहा है अभी ठीक है? Yes, sir. Now it's okay. Okay. So I was presenting actually. पता नहीं क्या हो गया फिर. Let me present again. Are you able to see now? Yes, sir. I am able to see you, sir, not presentation. You're not able to see the screen? No, sir. I am able to see you, sir. Oh God, wait a minute then. आपको मेरे को देखने का नहीं आती है. अभी अभी देखो. अभी दिख रहा है? Yes, sir. शेयर दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. I can. Okay, okay, right. So you're seeing typography, right? How is type measured? Yes, So sir. we were actually stuck up in this slide. So So I for have one all doubt, small, sir. yeah. 72 is a 1 inch font. So 1 inch will be the print, or the it will be show the size in the at the type of typing, sir. Yes, the type of typing. Not in the print. Hello. Yes, sir. ये ऑन ऑफ हो रहा है बार बार चला गया क्या शेयर है नहीं है No, sir. Now, no, sir. my voice Yes, sir. are you able to hear me Yes, sir. are you able to hear me Yes, sir. I am able to hear you, sir. हाँ थोड़ा कुछ ये शेयर स्क्रीन शेयरिंग चले गया ना Yes, sir. ठहरो एक मिनट शेयर करूंगा मैं I don't know why it's happening. अभी शेयर हो रहा है Yes, sir. you are able to hear me also Yes, sir. Clearly. okay 1 minute let me go to this so now I have typed your name are you able to see your name Yes, sir. what is that is the spelling correct I have typed your name correctly or No, गलत sir. है But it's a Z in place of F and F in place of Z, sir. हुजैफा अच्छा Z और इधर F आता नहीं Yes, sir. ये करेक्ट है Yes, sir. It's correct. हुजैफा So, अली ठीक है अब now for instance your doubt you asked a doubt this yes, sir. is 72 points I have put this in 72 points Yes, sir. so if I make this again you see here again I will make this into uh,
say for instance 36 point. So So abhi, it will print the h will be print in a 1 inch, sir. yeah, exactly right, you are right, that is 72 point. Okay, अगर Yes, sir. आपको हाफ इंच चाहिए तो मैं आपको हाफ इंच में भी कर सकता हूँ इधर, वो दिखने में इधर ऐसा रहता है, लेकिन जब वहां छापते समय it will be coming like that. Now I'll type again. So I will type now. You see. So it is now like that. We will be able to change the fonts of all the things. So when I want to measure the letter size or space between the lines, space in the beginning of the paragraph, all these things are measured in points. But अगर आपको बड़ा मेजरमेंट चाहिए, बड़ा मेजरमेंट क्या हो सकता है? अब ये मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, इसमें अभी साइज ऑफ द, इसमें साइज ऑफ द लेटर तो अब मैं बोल दिया आपको 72 हो सकता, 36, 18, 12, 10, 8, 4, 4 फॉन्ट तक, 4 पॉइंट तक भी जाएगा, छोटा भी, जैसा आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आता है न्यूज़पेपर में। अभी आपको ये न्यूज़पेपर जो दिखा रहा हूँ मैं आपके विंडो में, ये देखिए। सो इन दिस स्पेस बिटवीन द लाइंस भी पॉइंट्स में मेजर करते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ में चाहिए तो वो भी हम क्या करते हैं, पॉइंट में मेजर करते हैं। ओके, और यू सी anything that is small is measured in point. Now if you can tell me, can you tell me what is the bigger measurement here? इससे बड़ा measurement क्या है? Length of the line is measured in the length of the line. You see the line here, the length of the line, the Yes, sir. the length of the column. This is measured in bigger unit. ये जैसा 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह 12 पॉइंट अगर आप लेंगे, यू सी हियर लिटिल टाइपोग्राफी, 12 पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक पाइका और ईएम बोलते हैं। ईएम है, देखो सीएम नहीं है वो, ईएम। Yes, sir. देखिए, सो 12 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पाइका एम। सो विच मीन्स अब आपका 6 इंच हेडलाइन है, सपोज आपका 6 इंच हेडलाइन है, सपोज ये इधर दिखा रहा हूं मैं आपको, हेडलाइन सपोज ये एक 6 इंचेस वाला है, इसका मतलब इज हाउ मेनी, 36 पाइकास। सो एट दैट टाइम वी डोंट मेजर इन पॉइंट्स, वी मेजर इन a bigger unit known as पाइकास। अब देखिए, आपको आपका घर से सिकंदराबाद स्टेशन को आप होना बोल तो मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप डिस्क्राइब नहीं करते हैं। आपका आपका घर से और स्टेशन को कितना, तो कैसा मेजर करेंगे आप? बड़ा यूनिट यूज Kilometers. करेंगे। Kilometers. वेरी गुड, किलोमीटर। तो मिलीमीटर से अब किलोमीटर, मिलीमीटर बोल तो बहुत लग जाएगा, नंबर याद भी नहीं रहेगा। तो 3 किलोमीटर इज इजी टू रिमेम्बर। सिमिलरली लेंथ ऑफ द लाइन, length of the line, length of the column, length of the headline is measured in what is known as pikas. एक पाइका क्या है? 12 पॉइंट है। So 72 divided by 12 is known as 6 pikas. So 1 inch is equal to 6 pikas. 6 pikas is equal to 1 inch. 72 by 12 is equal to, ये मिनिमम है। आपका नाम तो भी भूल जाओ जिंदगी में, लेकिन ये नहीं भूलना। आपका नाम भूल गए तो कोई याद दिलाएगा, लेकिन ये तो कोई याद भी नहीं दिलाएगा आपको। So this is very important thing for us when we want to study typography. When we want. So what are all these types? You can have a look at these types. ये देखिए, आपको 1 इंच बोला है ना आप, ये पूरा इधर से इधर तक है तो 1 इंच होता, समझ गए? Yes, sir. This is known as the type size and it is measured in points. So now let us take Venetian is a classification. There are so many fonts available. And you see, let us get back to our course material here. For instance, in this, there is a very beautiful mention here. I will show you what is the difference between a font and a typeface. So typeface is don't often confuse your font. Font बोल तो क्या है, typeface बोल दो। For instance, ये वर्डाना और टाइम्स रोमन एक टाइप फेस है, लेकिन अगर टाइम्स रोमन 10 पॉइंट बोल्ड बोले तो वो फॉन्ट है। ठीक है, समझ गए? केवल हमें नाम जो छोड़ के बोल दिया समझो वर्डाना, तो आप फॉन्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहे। फॉन्ट बोल तो क्या क्या डिस्क्राइब करना, क्या टाइप है, क्या साइज है, क्या वर्जन है। हर एक फॉन्ट का अपना एक वर्जन रहता है। क्या वर्जन है वो देखिए, मैं भी आपको दिखाऊंगा। आपको पावर पॉइंट दिख रहा ना? अभी दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, अभी देखो, मैं आपको एक टाइम्स रोमन निकालूंगा। अभी मैं एक टाइम्स रोमन मैं इधर से निकालूंगा आपको। क्या है अपना, चलो टाइम्स रोमन, जब मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। अब ये है, क्या है? टाइम्स न्यू रोमन। ये केवल ऐसा बोले तो उसका नाम क्या है? इसको टाइप फेस कहते हैं। बट इसी को मैं 10 पॉइंट
बोल्ड बोला समझो, इसको हम क्या कहते हैं? फॉन्ट font. कहते हैं. So when anybody says use this font, which means he should tell three things. One is the name of the typeface times New Roman. Two is the type 10 point. Three is the bold. What do you mean by this bold, italic and other thing? देखो हर एक टाइम्स फैमिली है. अब इसी टाइम्स को मैं देखो मैं आपको क्या करूंगा, कॉपी करके इधर पेस्ट करके मैं अभी क्या करूंगा, इसी को आपको चाहिए तो मैं इसका बोल्ड वर्जन मिल गया है, ठीक है, बोल्ड मिल गया. अब इसी को मैं आपको क्या किया, मैं Italic. इटैलिक किया, ठीक है. अब इसी को चाहिए तो मैं आपको Underline. नहीं, अंडरलाइन नहीं करते. ये देखो Time. Italic italic bold. bold है. So please remember, all the types are classified into families. Like Venetian is a family. In that family, we can have types of different sizes like 10 point, 8 point, 12 point, 36 point, 72 point, 144 point, like that. At the same time, it will also have its versions. So like for instance, अब ये देखिए आपका ये हेडलाइन इधर किताब अब ये दिखा रहा हूँ मैं. इधर देखिए हेडलाइन बोल्ड में यूज किया, ये है ना, ये हेडलाइन बोल्ड में यूज किया. अब इधर देखो हेडलाइन बोल्ड में नहीं है, इधर है देखो, ये बोल्ड में नहीं है. So we can use the versions also. So when you are saying a font, it describes the name of the typeface, it describes the size of the typeface, it describes the version, like whether it is italic, whether it is times, whether it is italic bold. All these things are mentioned. Okay. So this is what we mean by difference between a typeface and font. So please see here, for instance, I have given here one particular font. Antiqua is the name of the family or font, as can be seen in the next slide. So this is the next slide. This is known as Antiqua, a family. Okay. And then we have here 1 minute. वो अभी लोड नहीं हुआ मेरे ख्याल से. ये old phase is a classification. So Garamond is a font. ये Garamond का देखो इधर दिखा रहा हूँ. इसमें सारा लेटर्स आ गए. Okay. And then you have here uh, a transitional. Baskervilli is one font. You can see, for instance, I have shown you Baskervilli font. So these are all the famous font. Modern face, Badoni is a font. So this is Badoni. So in a font, you will have all these things. I mentioned all these things are to be known by you. अभी ये Helvetica or Arial is known as, say for instance, sans serif. So sans serif means without any serif. This is slab serif. I can show you the font of slab serif, Rockwell, for instance. Okay, this is sans serif. Sans serif मतलब ये नहीं है. इसमें देखो ये एक्सटेंशन है ना, आपको दिख रहा है एक्सटेंशन? Yes, sir. ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशंस. ये जो है इसको, ये स्ट्रोक्स जो है इसमें नहीं है, देखो है इसमें नहीं है. No. So इस sans का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में विदाउट. सा इन फ्रेंच लैंग्वेज इज विदाउट. मतलब ये इसको शरीफ है, इसको शरीफ बोलते हैं. अब देखो इसको शरीफ बोलते हैं, इसको शरीफ बोलते हैं, जो एक्सटेंशन है. वही इधर देखो आपको है, शरीफ है? No, sir. नहीं है. तो इसको sans serif बोलते हैं. So most of the times you will find that in any publication they make use of sometimes serifs or sans serif. अब मेरे को बताओ अभी ये इधर आपको ये how a man headline वो serif है या sans serif है? It's serif, sir. Very good, very good. I appreciate you. Okay, अभी मैं और एक फॉन्ट दिखाऊंगा ताकि आप समझ में आ जाएगा आपको serif क्या है और sans serif क्या है. ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको. अच्छा, अब ये इसका कैप्शन दिख रहा है, जरा नजदीक से दिखाऊंगा. कैप्शन देखो, कैप्शन कौन सा है, शरीफ है या और कुछ है? थोड़ा छोटा लेटर है वो, दिख रहा है फोटो के नीचे कैप्शन दिख रहा नहीं? फोटो के नीचे भाई नहीं दिख रहा. मैं अच्छी ठीक से नहीं दिख रहा. अभी देखो दिख रहा है आपको फोटो के नीचे कुछ लेटरिंग? नहीं दिखा तो अभी दिखाऊंगा, ठहरो अभी दिखाऊंगा आपको. अब ये देखो, ये लेटरिंग देखो, ये लेटरिंग दिख रहा है आपको,
रिसर्च बोलकर। फैज अली, हेलो यस सर। हेलो। यस सर, यस हाँ, सर। आपको रिसर्च बोलकर लेटरिंग दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। हाँ, वो क्या लेटर है? वो ये सेरिफ है sans क्या? serif है सर, वेरी गुड, it does वेरी not have गुड। slab. It doesn't have any serifs, not slab. It doesn't have serifs. Serif. Okay, Okay sir. okay, very good. Now you understood that major classification is done by serifs, sans serif, like that. अब देखो हेलवेटिका, ये सेरिफ है sans serif है? sans serif है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सेरिफ है sans serif है? serif है सर ये। वेरी गुड। ये क्या है? ये भी serif है सर। यही आप बोल रहे थे ना, स्लैब सेरिफ बोलते हैं इसको, ये ठीक सर है, जो बोल रहे थे आप। सो यार अभी इसमें देखिए, ये sans serif यूज किया। sans serif. This is known as, for instance, a black savior ornamental letter. Sometimes you can also have this kind of ornamental letters. फ्री स्टाइल बोलते हैं उसको, ठीक Yes है। sir. अब देखिए फ्री स्टाइल है, ये फ्री स्टाइल वगैरह फॉन्ट रहता है। तो वेडिंग कार्ड में ये यूज करते हैं, जैसे हम हाथ से आपको लिख के दे रहे, सो जैसे पेश कर रहे हैं बोलकर। तो इस तरह अपन को फॉन्ट्स बहुत रहते हैं, जैसे ये देखिए हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट के जैसा रहता है, ये पूरा अपना हैंड राइटिंग के हिसाब में रहता है, close to that. So broken types. So this is also a font where you can see. So types also give some expressions. Types have some expressions to show. अब फॉरेन टाइप्स है, देखो इसमें देखो, ये दूसरा चाइनीज लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, वो पूरा भी तेलुगु या उर्दू या जो भी है, वो भी फॉन्ट्स में आता किसी के। तो आप होना बोल तो ये यूट्यूब भी देख सकते हैं। मैं अभी आपको मेल कर दूंगा साहब को, मैं हमारे सुनील साहब को, वो साहब आपको भेज देंगे, ठीक है। एक Okay sir. यूट्यूब की लिंक दिया मैं, ताकि आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। So Okay sir. that is all about what is known as typography. Now let me stop sharing and get back to the class. Now we also have what is known as typography, and then we have preparation of ये भी नहीं है एक्चुअली, अभी यूज नहीं कर रहे हैं। एक जमाने में यूज करते थे कि एक डमी के जैसे बनाते, डमी मतलब एक नमूना के जैसा, पहले जमाने। अभी नमूना की जरूरत नहीं है, अभी पूरा कंप्यूटर युग में पूरा, अभी वो नहीं है एक्चुअली। So that is not there actually, dummy. But dummy you should know from theoretical point of view. What is dummy? Dummy means some a sample of how your publication is going to look. Like how you will make a small rough idea, no, rough plan जो डालते हैं, वो डमी बोलते हैं। आप आपका घर का अगर नक्शा डालना है तो भी एक आप रफ प्लान डाल लेते, कागज लेते हैं, एक पेंसिल पेपर में, इधर आना बेडरूम ये इधर। बाद में उसको आर्किटेक्ट क्या करेगा, ठीक तरह से पूरा कंप्यूटर में लगा के आपको प्रिंट निकाल के देगा, प्रिंट, ठीक है। जो पहला आप हाथ से नक्शा डाला है उसको हम डमी बोलते हैं। उसके पहले जमाने में ऐसे होता था। अब ये पेज है, ये पेज का क्या करते थे, वो इसी साइज का एक पेपर लेते, इसी साइज का इतना बड़ा पेपर लेके वो हाथ से लिखता, इधर हेडलाइन ऐसा आता, ये फॉन्ट जाता, 3 लाइन का रहता, वैसा बोलता, ठीक है। दैट इज द थिंग। सो 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, रहे तो कोई बात नहीं, और रिंग होने दो, मैं बाद में। सो प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव, सो आवर नेक्स्ट यूनिट इज व्हाट इज नोन एज production techniques. So when you want to produce a folder, when you want to produce a brochure or an annual report, so please go to page number 67. Can Yes you sir. go to page 67 में क्या है बोल तो, ये पीआरओ का एक जिम्मेदारी पड़ता है कि वो सारा पब्लिकेशन निकालने का जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ता है। So he will have some no tension, but he should be able to perform that managerial function of production of a folder, brochure, all these publications. Please remember, this is a very important task of a PRO. So he need not do the work like how we are now trying to understand how the work is done, but he has to ensure that the work is done, that he should get it done. And to get it done, as I said yesterday, he should also be able to thoroughly know what is what. So production of a folder, let us say for instance a folder. फोल्डर का नाम में है कि उसमें कोई सिलाई नहीं है, केवल एक फोल्ड होता है, और इट्स नोन एज ए folder. So in minimum information, it may be of say 4 pages or sometimes 6 pages or sometimes 8 pages. It depends on, उसमें कोई सिलाई नहीं रहता, धागा नहीं रहता, वायर नहीं रहता, किताब के जैसा नहीं रहता,
ओपन करें तो एक बड़ा शीट हो जाएगा, फिर उसको हम फोल्ड करते हैं और पॉकेट में लगा लेते हैं. That is why it is known as folder. It can be have different formats like portrait format or landscape format. So we will have these folders. So please remember, when the PRO is thinking about this folder, he should know who will read, who are his audience, how they will read, how they will hold it, what is the whole thing is happening. So what is the information that goes in a folder? ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से वो नहीं पड़ेगा, कचरा कुंडी में डाल देगा, आपके आगे ही डाल देगा वो. आप वो एलिफेंट ब्रिज सिकंदराबाद स्टेशन जाओ, वो पैम्पलेट बांटते रहता वहां ठहर के बेचारा. एक पैम्पलेट येलो पेपर में पैम्पलेट देते रहता है, अपना उसके आगे वो पेपर ऐसा डाल देता है, वो पढ़ता भी नहीं. सो प्लीज रिमेम्बर, तो वैसा करने से क्या फायदा है? So suppose you produce a beautiful folder in a good quality paper and you give it to him, then he will feel that let me go through what is in this, maybe at my leisure. So अपने बैग में डाल लेगा, बाद में तो भी वो करेगा. Now when you want to produce, please remember, your managing director will tell you, no, no, let us make it only 200 copies. We are not going to give more than that. You must tell the manager that 200 copies is not economical. 200 copies will be. जैसा आज आप सब्जी का दुकान में गए तो क्या बोलता, 100 किलो 20 रुपए, आधा किलो 30 रुपए बोलता, आधा किलो 40 नहीं रहता, आधा किलो ले तो 30 रुपए है ना, मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Same economics works here also. If the number of copies is less, then you are already everything you have made, you are arranged the layout and everything. उसका तो पैसा एक ही रहेगा, चाहे आप 2 कॉपी प्रिंट करें, 2000 करें या 2 लाख कॉपी प्रिंट करें. So the main work of that. So the lesser the copies, the costlier it may become any publication. But लेकिन आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उतना रख के क्या फायदा है? So sometimes what happens, you have to think carefully, you have to plan carefully whether you're going to put to use all the number of copies that you're going to print. Which means step number 1, आप आपका ऑडियंस कितने लोगों को भेज रहे हैं. तो पक्का 1000 लोगों को हम भेजना है किसी हालत में, तो 1000 छाप लो. नहीं, हम 1000 रख लेंगे और 500 अगर डिमांड बढ़ गया, कोई आके पूछे तो देने के लिए, तो 1500 कर लो. So this economics is something which is very important on the part of the PRO when he is producing, say, a folder or a brochure. So design of the folder also, you should also be careful. No need to worry about designing, because we have got the software, we are having the monitors where we are able to see. उसको वाइसविक बोलते हैं. वाइसविक मतलब WYSIWYG. इसका मतलब क्या है? जो आप देखते हैं वही पाते हैं. What you see is what you get. So which means if you are Ufais Ali is saying that the font should be, say, the 3-column headline, and then it should be, say, 48 point and times bold, capital and lowercase, then you will type, and I will show you 48 point 3-column times bold capital lower कैसा दिखता है छापने के बाद, पहले आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं. So that is the greatest advantage of the technology, present day technology. आप सब लोग बहुत खुदकिस्मत वाले हैं, जितना हम बदकिस्मत थे उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं था. ठीक है? That is the main thing that you should be able to remember. So this is design. Like that we have brochure also. ब्रोशूर में क्या होता है? ब्रोशूर बोलते ही सिलाई होता है उसमें. तो एक 20 पेज का है, 24 पेज का एक बुकलेट के जैसा रहता है, तो उसको सिलाई करते हैं हम, उसको कहते हैं हम ब्रोशूर. सो ब्रोशूर इज one word taken from German language. broken मतलब स्टिच होता है वो. So लिबरली यूज. so काफी लोग क्या करते हैं, फोल्डर को ब्रोशूर बोलते हैं, ब्रोशूर को फोल्डर बोलते हैं, कि वो तो आम आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. So many times people get confused. But as a PRO, a folder is something where it's only fold is there. Brochure is something where there is a stitch. It is stitched in the back, like a book is stitched. Even this is also stitched either by the wire or by the thread. So we have this brochure also. Then all of us know what is annual report. That we can now. The time is over. I have got 2 minutes more. You can feel free to ask me any doubts in these 2 minutes. Because 11:30 और कोई आ जाएगा बंदा. So I think now with these classes are all over, you please go through. Faiz Ali, you have my phone number. You can always, if you have any doubts while reading the course material, please feel free to WhatsApp your question. I will immediately reply to the best manner possible. I will reply at the earliest possible, time that I have got. Okay.
Okay, sir. Anything else you have got? Uwais Ali, 1 minute time No, है अभी भी आपको. no, no, sir. No, no. So ठीक है. I'll please go through all the material and also help your friends. What you have listened to me, what you have heard, and you said it is not being recorded. I think it is being recorded. Uwais Ali, मेरा लाल This this एक this session is being recorded, sir. But previously, I think नहीं two नहीं three यार sessions हर hasn't been. No, no. I नहीं checked. यू चेक करे ये क्या Yes, yes. यूट्यूब में आता क्या? Yes, sir. YouTube में आता है, sir. YouTube में stream होता अच्छा अच्छा. तो कभी भी चाहिए तो वो लॉग इन करके सुन सकते हैं ना. No, कौन करेगा no, यार? no, no need of logging in. But we can, if we are having a link, we can directly go through that link. I will Go to send the you the link. link if you need it. Send me the link. Let me also have an idea कैसा दिखता है Okay, क्या okay, है. sir. I will send you the link, हाँ, sir. तो किताब पढ़ने में मुश्किल है. अब ये पूरा सुनना देखना कहाँ से करते हैं यार No, बच्चे तो बात but कर. what we get, sir, by listening you, we will get more idea than reading this book, sir. नो आई डू एग्री विथ यू दैट इज ट्रू. जो हम जो बोल रहे हैं आपको फैज अली किताब से नहीं बोलते, हम तजुर्बा से बोलते हैं. Yes, sir. ठीक है ना, तजुर्बा से बोलते हैं. और जो बाहर जो हो रहा है हम आपको बोल रहे हैं ताकि Yes, आप इधर भी पढ़ते हैं. yes, sir. नहीं बाहर जाने के बाद हाँ वो भी हमें बोला था साहब, ये भी पढ़ाए थे हम आपको. When we once तो listen you, we can make our own text and we हाँ, can your be own idea or and yes, perception and then yes, okay, sir. thank you very much. I appreciate your Thank patience. you, thank you, thank you, God sir. bless Thank you. you. Right, The same right, to you. God, Thank you. right.